Good morning, students. Today in MSc, I am going to discuss the chapter number 10, fill in the blanks. That is your exercise questions. So here it is, the first one, fill in the blanks of this chapter. Let's start with this. All of us need to communicate with mother. What we have to fill it here? Nature. So you will write it down here, nature. N-A-T-U-R-E, nature. Next comes the, we get most of our food from, हम लोग बहुत सारे फूड जो होते हैं वो हम लोगों को किससे मिलता है? फ्रॉम प्लांट्स. सो यू विल राइट इट डाउन हियर, प्लांट्स, P-L-A-N-T-S, प्लांट्स, इजंट इट. इस चैप्टर में भी आपको बताया गया था कि जो नेचर है, जो हमारे वर्ल्ड जितने भी आसपास चीज़ें हैं सराउंड्स करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, इजंट इट, राइट? एंड वी शुड स्पेंड सम टाइम between the nature also, and plants provides us with the food, clothing, wood, oxygen and other products, isn't it? And we should not waste gifts from nature. Now next we are going to move to the next question. Next question, it is here, dash % of all medicinal drugs are made from wild plants. यानी कितने परसेंट जो हैं हमारे जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो वाइल्ड प्लांट से बनाए जाते हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज 80%. सो वी विल राइट इट डाउन हियर, 80, E-I-G-H-T-Y, 80% of all medicinal drugs made from wild plants. Next, fourth one, the Van Mahotsav Day is celebrated on dash every year. यानी कब ये सेलिब्रेट किया जाता है? On 15th July. So you will write it down here, 15th July. 15th July. Next, waste not, dash not. What is that? Waste not and dash not, that is want not, isn't it? We should not waste the natural gift which is given by our nature. Next comes the D question number. Put a tick against the correct sentences and cross against the wrong sentences. जहाँ पे भी करेक्ट सेंटेंसेस आपको मिलता है, यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं अगर ये करेक्ट है, then you have to put tick mark, and if this statement is wrong, we have to put the cross there. So let's start with the first one here. It is first number. Minerals are natural resources. Minerals क्या है? Natural resources, isn't it? Right? Yes. You will take here. Second one. Nature is provided us with numerous gifts. यानी जो नेचर है वो हम लोगों को क्या प्रोवाइड किया है? बहुत सारे गिफ्ट से, isn't it? Yes, it is also true. Third. गार्बेज कैन बी थ्रोन एनीवेयर वी लाइक. क्या हम लोग को गार्बेज जो कचरे होते हैं वो कहीं पे भी हम लोग को थ्रो कर देना चाहिए? नो, इट इज़ नॉट ट्रू. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यू विल क्रॉस इट हियर. फोर्थ, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st April एवरी ईयर. इज इट ट्रू? 21st April को सेलिब्रेट होता है? नो, इट इज 22nd April. सो we will write it down here. What we will write? Here we will cross it, isn't it? Because that that is Earth Day is celebrated on 22nd April, it is not the 21st April. Fifth one, wind disperses the seeds of the dandelion plant, right? Yes, wind disperse क्या क्या करते हैं? जैसे आपके जो seeds हैं वो क्या हो जाता है, कहीं और उड़ करके wind की वजह से चला जाता है, isn't it? That is the meaning here. तो yes, जो seeds होते हैं dandelion plants के वो क्या होते हैं? डिस्पोज हो जाते हैं wind के थ्रू. So this statement is also correct here. Now E number. Here it is written here to draw lines, but you are not going to draw lines here. What you have to do is you will write the numbers in front of the is. Okay, answers आप यहाँ पे mark करोगे. You will not draw lines here. So let's start the first one. Water. वाटर क्या है आपका? नेचुरल
resource or natural resource. So you will mark it here 1 number. Second it is photosynthesis. Photosynthesis ये किसका प्रोसेस है, कौन करता है ये? Plants to prepare food, isn't it? So here you will mark it as second number 2. Third it is the creator. Who is the creator of the world or the universe? God. So you will mark it here as third number. Fourth, forest. Forest में कौन रहते थे? Parrot and deer. So you will mark it here as fourth number. Lastly is the fifth number, la and rubber. ये दोनों कौन से प्रोडक्ट्स हैं? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. सो वी विल मार्क इट हियर एज फिफ्थ नंबर. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न दिस एंड you have to fill it in your book. So that's all for today. Thank you.